We extend a very warm welcome to all our brothers and sisters, fellow friends from world over. Those are joining this international Zoom session, our webinar across the globe in different countries, in different continents, in different time zones, in different conditions. Ladies and gentlemen, today we are going to take you to one of the most beautiful part of India and one of the most scintillating and captivating part and the state and the region. When we go to northeast part of India, and particularly today when we travel through the clouds, through the mountains, through the rivers, through the lakes, and everything you're going to enjoy over there, it's beautiful northeast part of India, and welcome to the Destination-Arunachal Pradesh. Ministry of Tourism, Government of India has taken the initiative that during this pandemic time, they all are putting in their best of efforts to promote domestic tourism the best possible way. We extend a very warm welcome to some of the people, those who have already joined on the YouTube. And Mr. Saurabh Tripathi, thank you very much. Vikram Jha, thank you. Julie Subba ma'am, thank you. All the other dignitaries, those are joining, we extend a very warm welcome to all of you. So green morning, green afternoon, and green evening to everyone on Monday, 23rd of August, 2021, because it's a beautiful Monday. It's Lord Shiva's day, and today is a Sanskrit day also, as far as India is concerned and the civilization is concerned. What could have been more beautiful than to travel to a place where the sun rises, the first when the sun comes up, and that is Arunachal, what we talk about. So let's travel with Arun and Achal to a beautiful Pradesh called Arunachal Pradesh. Hearty welcome to all of you. And this program is very specially brought to you with the very sincere efforts of the entire Confederation of the Northeast, which is for travel and tourism. And its Vice President, Mr. Tsering Wange. He's also getting another gentleman with him, Mr. Tsangpa Norbu, the producer, director, scriptwriter, and film researcher, and founder, T.N Entertainment Production House. Mr. Tsering Wange, I had been meeting very often whenever I have been traveling. And we are also thankful to his president, Mr. Blah from Meghalaya. And it's a beautiful body. They are doing a wonderful job. And I'm extremely, extremely happy because tourism is next to my heart and my heartbeat. So when we talk about Northeast, let's travel together and let's enjoy this evening. Wonderful our Arunachal Pradesh. So ladies and gentlemen, hearty welcome. आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत. International Chamber for Service Industry, which is a link between India and all the Indians, those who have gone abroad. We have got about 31 million Indians abroad in different countries. They are in different time zones, they are in different professions. But there's one thing which binds them with India, and that is called films. That's called television. That's called radio. That's called music. That is something your own. Whether you want to see a Hindi movie, Tamil movie, Telugu movie, Kannada movie, Punjabi movie, Bengali movie, Bhojpuri movie, or anything what you can think of. So enjoy music, enjoy films, enjoy television serials, and of course, you can have the voiceover of the radios as well. So we are moving together. Welcome to Northeast part of India and beautiful campaign by the Ministry of Tourism, Government of India, Dekho Apna Desh. And that is something beautiful. India is beautiful. Northeast is beautiful. People are wonderful. The art, the craft, the culture, the heritage, the cuisine, the dances, the music, and everything whatsoever you can package in the Northeast part of India is something is superb. And in the green area, what you can see right on the top over there is Arunachal Pradesh. We are going to cover for the next 8 days. Of course, Sunday we will have in between a break because Sunday we always go to our NRI brothers and sisters abroad. So Sunday you will have a special program with NRIs.
But all other days when we talk about, we are taking the journey to the northeast part of India. And we are going to cover all the 8 states. We want to see the hidden treasures, the potential, and whatever they hold. We are grateful to Mr. Ajay Gupta, the ICM. They had organized recently, just on the 20th of this month, today is 23rd, 3 days back, and he got the entire travel trade together on a common platform. We were the knowledge partner over there from the chamber, and it was wonderful to see everybody from the travel trade fraternity, including the hospitality industry, and of course the media entertainment industry together on a common platform. So heartiest congratulations to Mr. Ajay Gupta, moving from virtual to reality. That was held in Delhi, and that was a wonderful event which they had organized. Welcome to Northeast India. And today we are going to focus, of course, on Arunachal Pradesh. And there we have requested Mr. Tsering Wange that let's talk about film tourism. Let's see what all has been done with regard to film, sound, music, light, whatever we have done it over there. Yeah, and further what we propose to do over there, we're going to take on that into our entire program. So ladies and gentlemen, we would request our distinguished guest just to mute the mic, please, because the voice is coming here. Okay. So the ICSI extends a very warm welcome to all of you, and particularly our distinguished guests, those who have joined us this evening with us. Under the dynamic and dedicated leadership of Manmohan Singh ji, the film director, producer, writer, cinematographer, singer, whatever you can call it, and with Yash Chopra ji, he has given the beautiful films to the entire world, and particularly our brothers and sisters, those are NRIs abroad, they enjoy quite a bit. Beautiful chemistry and a synergy between late Yash Chopra ji and Manmohan ji, and they started wonderful films. Dil to Pagal Hai, Dilwale Dulhaniya Le Jayenge, Chandni, Lamhe, Mohabbatein, wonderful films they shot, and they made Switzerland so popular that there's a lake on name of Yash Raj ji at present over there. You can well imagine how the film can change any place, any destination. It all depends on your packaging. And thereafter, Manmohan Singh ji thought, why not we should promote the Punjabi cinema also? And he took wonderful journey and a tilt toward this side, and a new dimension been given to Punjabi cinema. Now, ladies and gentlemen, all of us, we got to understand one thing very important, that the cinema and tourism, they are inseparable. Tourism promotes cinema and cinema promotes tourism. Both of them, they can do the hand holding. It is like a hand and glove. It's a packaging together. You remember beautiful songs being shot in different locations. And when tourists travel, they want to go to those places, particularly where the films are being made. Our chamber has been working deeply for quite some time as far as the cinematic tourism or the film tourism is concerned. We started long time back. And if I share with you, on 17 December 2005 at Mumbai, we got all the production houses together, and the Chandigarh Administration Tourism Department, Punjab Tourism Department, Haryana Tourism Department, everybody going together. And that's a common packaging, meeting all the production houses. And the outcome of this was that in early 2006, there was a Bollywood facilitation cell which was opened up. And that is such a facility, because production houses, they got such an easy breath, because everything is being given from one place. Thereafter, we took Government of Punjab. The Honorable Chief Minister of Punjab was kind enough to go with us to all the way Mumbai at the Hotel JW Marriott. In the morning, we organized the conference. In the evening, we had organized the awards. And from time to time, we have been giving film tourism proposal to the Government of Punjab that now Mohali Airport has come. And in the near vicinity somewhere, if you set up a film city, it can do wonders, and it would generate employment, entrepreneurship, infrastructure development, economic multiplier. 2015,
with the Ministry of Tourism, Government of India, we had another initiative that was on 8th of April 2015 in the Hotel Samrat, New Delhi, under the leadership of Honorable then the Tourism Minister of India, along with the Secretary Tourism, Additional Secretary Tourism, Joint Secretary Tourism, all of them together. It was something wonderful. And can you imagine, this is 8th of April and 8th of May, exactly after 1 month. We took Additional Secretary all the way to Mumbai and we told, let's hold a discussion with everybody, all the production houses, all the association, let's meet them. What is their demand? What do they want? And now in 2017 on 30th June, we took another initiative. We brought all the Northeastern states together along with the ASEAN and under the Ministry of Commerce and Industry, Government of India, right at the center, that time the Joint Secretary, now presently Secretary in the Government of India, all of them together. And it was such a wonderful experience because everybody, when they shared their vision over there, and I still recall a lot of production houses from the Northeast, they have come to the forefront, and we will show you tomorrow some of more clippings. Now, the film tourism, when we talk about, at present, besides Ministry of Tourism, the initiative has gone to Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, and Film City for the various activities. When we talk about single window clearance, what we initiated in 2005, I'm very happy to hear that the Ministry of Information and Broadcasting has taken initiative now recently, and they have set up something on those lines. So that something is good. It should be done at the national level. And if we see, Haryana was carved out of Punjab, the big Punjab, and from there the Himachal had come out and Haryana had come out. Now Haryana has also taken initiative and they have decided they're going to set up their own film city. And on 24th of March 2021, they had taken. Along with the Sector Skill Council, now this is a great initiative of the Honorable Prime Minister of India, that there is a separate Ministry of Skills and Entrepreneurship. That something is wonderful. And there is a separate Sector Skill Council. There are 37 of them. And one of the most dynamic, I would call it at these times, because everybody is glued to the television, to the radio, to the media, whatsoever you can. So Media Entertainment Sector Skill Council, we have done about 100 programs with them. Very dynamic. Mr. Mohit Soni, the CEO, and his entire team, they need a big applaud. Now, there are different job roles. There are different, skill programs and skill initiatives by the ministry. And these are free of cost. No money to be paid by anybody. You can pick up any program, anything you can do. And all these programs will fetch you under the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana Part 3, a certificate also. Now, over here, if I'm talking about, let's see what our chamber is thinking for the future, because we are a part of service industry. In service industry, you have got 54 areas. Ministry of Commerce and Industry, Government of India has identified 12 areas that has been passed on to, Ministry of your MSME also, micro, small and medium enterprise. All of them, they are enjoying that. And over there, we would like to share with you something very important, that our chamber has taken decision now. Initially, when the pandemic started on 25th of March 2020, we were completely focusing on education, skills, hand-holding of teachers, educators, principals, vice chancellor, directors, technocrats, ITIs, polytechnics, sector skill councils. Now the time has come. We got to revive the industry, particularly the first bird which was shot and hit when pandemic hit, and pandemic complete lockdown in the country and world over, because many countries are surviving only on tourism. So that point of time, you can well imagine all travel agents, tour operators, tourist transporter, excursionists, hoteliers, restaurants, small tuck shops, and so many people directly or indirectly related to tourism and hospitality venture, your tourist guides, your excursionists, your other people, सब कुछ रुक गया. अब उस दोबारा उसको revive करना है.
The revival of tourism, repackaging of tourism, rejuvenating tourism, rethinking tourism, and re-educating tourism, reskilling tourism. You can use any word whatsoever you feel like, but there has to be a new order for the tourism. So our chamber has taken the initiative, and we are working in that particular direction, that when we are having 75-year celebrations of India, throughout the year, we will be working on that product and project. At the same time, when India would be celebrating 100 years of its independence, that's in 2047, what kind of a tourism would be there? How India would look like? What kind of infrastructure would be there? How people would be demanding? What would be the supply? What would be the matchmaking and all that? And you would be happy to know, today we are talking about the film tourism of Arunachal Pradesh, but just on 18th of August, about 5 days back, we have done the complete case study of 1,000-acre Noida Film City, which is coming up, which is a wonderful project. And if it comes true, and if it comes true timely, because they propose to start the construction soon. The first phase they want to complete by 2024, second phase by 2027, and the third phase by 2029. The new international airport, which is coming up in the greater Noida and a little beyond, when you talk about, that's called Jewar. That's going to be just 7 kilometers away from this film city. And this film city is going to house accommodation, hotels, and infrastructure in terms of equipment, amusements and parks and recreational activities. It will have a lot of indoor, the digital kind of a things, pre-shoot, during the shoot, post-shoot, post-production, whatsoever is needed, all that they are going to get in one particular area. So people would be very happy to come over here and see this particular infrastructure. The US-based company has drawn the complete DPR, which has been submitted in the first week of June to the government of Uttar Pradesh. And now the EOI has to be floated in the government. That's called expression of interest. And thereafter the job to be allocated. 6,000 crore rupees tak ka initial the expenses they have already thought of. And they say that in 2024, जब ये पूरा पहला फेज खुलेगा, 25,000 crore की income they are expecting the first year. And they say it can rise up to 2025 tak, up to 30,000 crores. You can imagine what is the potential. बच्चों को आज चाहिए something which they enjoy. The social media, when we are talking about, and then that was on 18th of August. 19th of August, we did complete case study once again. Over there, we talked about infrastructure development on 18th. 19th, we talked about what is the economic impact of film tourism and economic multiplier, how basically this promotes. This is the homepage of our website, ICSIindia.in. You can check up, you can see the entire thing. These are some of the recommendations what we have got. Because government is at present, promoting domestic tourism, focusing domestic tourism. Why not? Media entertainment industry can be brought closer because they are the one, those project our culture, our heritage, our art, our craft, our locations, our places, whatever they are packaging. तो जितने भी फिल्में बन रही हैं, टीवी सीरियल है, म्यूजिक एल्बम्स है, एड फिल्म्स है, वेब सीरीज है, डिजिटल एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन है, all that can be brought. पूरा स्क्रिप्ट का रिक्वायरमेंट से लेकर इनिशियल थॉट प्रोसेस से लेकर till the finished product and the launch of the film, everything can be done. Media entertainment industry can join hands with the tourism industry, and I think that would give lots of leverage. बच्चों को रोजगार भी मिलेगा, इसके साथ शिक्षा, कौशलता और उद्यमिता तीनों चीज को लेकर आएंगे. It's all up to the state government and the union government. How do we proceed together? The new education policy 2020, which has come, we strongly believe, and our chamber strongly recommends, टूरिज्म को अलग से सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जाए? Why not tourism should be the integral part? जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, कंप्यूटर्स पढ़ते हैं, कोई भी चीज आप पढ़ते हैं, आर्ट पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, टूरिज्म क्या है?
geography of my country, history of my country, culture of my country, heritage of my country. हमारे भारत की हर चीज को अगर पैकेज करना है और दिखाना है बाहर वाले लोगों को कि ये हमारा जो देश है ये महान कैसे है, विश्व गुरु कैसे था, हम 28% कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कैसे देते थे, सोने की चिड़िया कैसे था. So why not the tourism, the पर्यटन, that should be the integral part of education. इसको अलग से क्यों एक सब्जेक्ट हम सोचते हैं? It should be the integral part. और जैसे आपका G7 है ग्लोबल लेवल पर, why not we should have India G7? That means the different ministries can come together. Ministry of Tourism, Ministry of Information Broadcasting, Ministry of Education, Ministry of Culture, Ministry of MSME, Ministry of Skill Development, Ministry of Electronic and Information Technology. अगर ये सातों मिनिस्ट्री इकट्ठे मिलकर काम करें तो जो कुछ भी आप शिक्षा देना चाह रहे हैं, कौशलता देना चाह रहे हैं, उद्यमिता देना चाह रहे हैं, स्टार्टअप चाह रहे हैं, एडटेक प्लेटफॉर्म चाह रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप चाह रहे हैं, everything can come from there and that can be wonderful. We are going to bring the entire Northeast India on 8 different days. हम फिल्म टूरिज्म पोटेंशियल की बातचीत करेंगे आपके साथ और इस सब चीज को लेकर चलेंगे. 23 अगस्त आज मंडे को हम अरुणाचल प्रदेश की बातचीत कर रहे हैं. कल हम मेघालय की बात करेंगे. वेडनेसडे को हम आपको नागालैंड लेकर चलेंगे. थर्सडे को असम चलेंगे. फ्राइडे को त्रिपुरा चलेंगे और सैटरडे को मणिपुर चलेंगे. संडे को हम अमेरिका जाएंगे, एक दिन का वो, क्योंकि 9 एनआरआईज का प्रोग्राम होता है. मंडे को मिजोरम चलेंगे और ट्यूसडे को सिक्किम चलेंगे. That's the way we are going to take the entire journey. And Tsering Wange, the Vice President of the Chamber, the confluence of the entire Confederation for the travel and tourism for the entire Northeast, he's doing a wonderful job bringing everybody, all the stakeholders together. Their entire team is wonderful. Kal hum aapko Meghalaya lekar chalenge, the Scotland of the East, and you would enjoy something beautiful. So ladies and gentlemen, whatsoever human mind can conceive and believe, it can achieve. Let's get together. Let's come together. Let's work together. Let's collaborate. There's no more competition. Corona has taught all of us that now at present there's a collaboration, there's a connectivity, and all of us, we are working together. Welcome to the sun rising, wonderful people, the art, the craft, the culture, the cuisine, the dances, the music, the tribes, and everything what it has got, the land of the dawn-lit mountains, beautiful lakes. Ladies and gentlemen, I'm grateful to Mr. Tsering Wange, who is the Vice President of the Northeast, the integrated, what you have got, the Tourism Confederation. He's also the Chief Advisor for the Arunachal Pradesh Tourism. He's also the President for AMSA. He's the founder and CEO, Himalayan Holidays. जब हिमालयन की बात आती है तो माउंटेन्स की बात आएगी, माउंटेन्स की बात आएगी तो एडवेंचर की बातचीत आएगी. So, Mr. Tsering Wange is the first Indian to do the world highest sky jump. Put your hands together. सबसे ऊपर नक्शे में आपने अरुणाचल को देखा और ये देखिए, the first Indian to do the world highest sky jump. He's an adventurer hailing from the border town Bomdila, Arunachal Pradesh. Believe you me, it's a wonderful place. I used to travel from Tangavali to Bomdila to Tsering to Sela Pass to, the entire thing, and then go to Tawang and then Lumla and all the places. And something beautiful. आपकी खिड़की से बादल अंदर आएंगे, आपको लगेगा कि लव स्टोरी 1942 की शूटिंग चल रही है और बादल आपके दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे, आपको वहीं छोड़ के जाएंगे ताकि आप एंजॉय करें. He has been working in the tourism field over 2 decades, developing and promoting adventure tourism, especially trekking, camping, and mountaineering in, Arunachal Himalayas. You would be proud to know, ladies and gentlemen, his wife at present is in mountains. She has gone on an expedition. I would request him during the deliberations, he should tell us where the madam at present is, where has she reached.
and how long is the trip, when is she coming back. He traveled to 48 countries and regions around the world and have participated in all major tourism fairs and festivals and conferences and events like International Travel Bourse, ये बर्लिन में होता है, जर्मनी में होता है. वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट ये यूके में होता है, अल कोट में अभी होता है. Then ITE, then ASTA, WTC, then ITI, then ITM. Couple of programs, world over to promote Northeast India tourism in general and Arunachal tourism in particular. He's a recipient of the Arunachal State Tourism Award, India Travel Award, and International Hospitality and Tourism Award. We are proud that Mr. Tsering Wange is joining us this evening. We also extend a very warm welcome to Mr. Tsangpa Norbu, the producer, director, scriptwriter, researcher, founder, T.N. Entertainment Production House, Arunachal Pradesh. Ladies and gentlemen, he has got to his credit. He has produced 4 feature films, 8 documentary movies, and 11 short films, and 18 video albums. Wow. Great, great, great. He got his citation from the Deputy Commissioner Tawang in 2006 Statehood Day, citation from the NEZCC होता है, Northeast Zone Cultural Council या Confederation. So NEZCC, Dibapur, Government of India. And then certificate of merit for best documentary by Government of Arunachal Pradesh, Arunachal Film Festival 2013, certificate of merit for the best feature film, Arunachal Film Festival 2015, certificate of merit for the best short film 2017 by Arunachal Film Federation, and State Gold Medal Award, Arunachal Pradesh on 26 January, the Republic Day of India in 2017. So ladies and gentlemen, sound, light, action, thak, cinema and tourism, cinematic tourism. And let's travel with Mr. Tsering Wange and Mr. Tsangpa Norbu now to beautiful state. I'm going back to 1973, my days. Wow, that's lovely. Wonderful, wonderful. What a pleasure. Hearty welcome to both of you. You both are looking so colorful, and he's putting on something, the state. Wow, that's great. Tsering Wange ji, I'm so very happy to have you and Mr. Norbu. Yes, please, let's move ahead together. Thank you so much. Hearty welcome, hearty welcome. So I would request, let's share and let's start with Mr. Tsering Wange. I would request him to take on the floor and thereafter bring Mr. Norbu also in and kindly conduct the program from here. I am taking you to welcome to the northeast part of India, to the beautiful state Arunachal Pradesh, and we will talk about the film tourism. Thank you very much. Good evening, good morning, good afternoon to all our friends, viewers, all around the different parts of the world. This side I'm Tsering Wange and I'm from Arunachal Pradesh. Dr. Gulshan Sharma has already given a long list of introduction, and I would not like to repeat it again. But yes, I would really, at the outset, I would love to thank Dr. Gulshan Sharma and the International Chamber for Service Industry for giving us this opportunity to showcase our potential and prospects of film tourism in Arunachal Pradesh. For those who don't know much about Arunachal Pradesh, I would like to inform you that Arunachal Pradesh is the largest state in the northeast region of India, and it borders the China, Tibet on the north, then Bhutan, and also Myanmar, and our Assam in our southern side. Arunachal is 84,000 square kilometer, and mostly it's a mountainous region with a lot of flora, fauna, and very, very, I would say, absolutely, we can give a tough competition to Switzerland. I've been to Switzerland many times.
I've been to different parts of the world. I've traveled to about 48 countries and regions around the world, and I will not exaggerate, but I will say that Arunachal can really give them a run for their money. Well, we talk about when we talk about film tourism in Arunachal Pradesh, well, we're not doing very well, but we are really picking up very fast. I was associated with a movie, Bollywood movie called Koila, and it was a record. It was a record for the actor and actress and the director producer to spend 45 days non-stop shooting in Arunachal Pradesh. And of course, Madhuri Dixit and our Shah Rukh Khan, uh, Rakesh Roshan. So they were all here in Arunachal Pradesh, and I was the licensing officer. I was licensing with the government, with everybody, and we had about 100 people coming all the way from Mumbai, and they spent 45 days non-stop shooting. That was a record in itself. The movie did not do very well, uh, but they put all Westcommon, Balipong in the as a tourist destination. I mean, it created a lot of buzz, and people have started coming and seeing. अच्छा शाहरुख खान यहाँ पे नाचा था, वो माधुरी यहाँ पे आया था, ओ यहाँ पे यहाँ पे फाइट हुआ था. All things created a lot of domestic tourist movement in our area. So I'm really thankful and grateful to the Rakesh Roshan and his team. I've got a certificate also. I'm not able to share it right now, but he has given me a short certificate saying that Mr. Wange has given excellent service to our team, and he has invited me to Mumbai. But of course, I did not go there. That's another story. Uh, and then I have some small PPT to share with you. My connectivity is not very nice. If I can ask Chitra ma'am to help me out with the PPT. Just a short PPT. Chitra ma'am, are you there? No, no. I will just check up. I'm not aware of, but I'll just check up with her. I will just check up with her. Meanwhile, you can continue. Fine. Okay. So that's like to talk about the film tourism. There has been quite a few other movies which has been shot here in Arunachal Pradesh, and I'll be during my PowerPoint presentation. I'll be showing that one as well. Then there was also the Discovery Channel which has come and shot here. Then we have also there's also a movie which was shot here, Crossing Bridges, which has won a national award. And also we have a film festival every year in Arunachal Pradesh, and you will also be surprised to know that we have a film institute in Arunachal Pradesh, and very soon I think we'll have a full-fledged production house also. I think I will pass on the stage to my friend, a producer, director, and a very good singer. He has made several videos, and also he is an awardee. He has won many awards. So I will ask my friend Tsangpa Norbu to kindly give the mic, and after he's finished, maybe I'll come back with my PowerPoint presentation. Tsangpa Norbu. Hello, this is Tsangpa Norbu from the land of rising sun, Arunachal Pradesh. अरुणाचल प्रदेश नाम सुनते ही लोगों को ये इसका पता चल जाता है कि ये कितनी खूबसूरत जगह है. अरुणाचल यानी कि अरुण यानी सूरज जहां सबसे पहला अपना आंचल फैलाता है, हम उस जगह से हैं. और भारतवर्ष का प्रभात यहाँ से शुरू होती है. तो बिकॉज मॉर्निंग इज ऑलवेज ब्यूटीफुल, सो ये जगह भी उतनी ही खूबसूरत होगी जितने सुबह खूबसूरत होती है. तो इसमें इसकी खूबसूरती का
कोई जोड़ नहीं, कोई वो नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है इस दुनिया में, मैं ऐसा समझता हूँ। और जहाँ तक अरुणाचल के बारे में मैं शॉर्ट में कुछ बताता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो है वो more than 26 major tribes and more than 100 सब ट्राइब्स है। तो आप सोच सकते हैं कि इतने सारे ट्राइब एक ही स्टेट में रहते हैं, यहाँ बसते हैं। तो जितने ज्यादा ट्राइब उतने ज्यादा कल्चर, उतना ज्यादा ट्रेडिशन, हाँ, उतने ज्यादा कलरफुल अटायर एंड देन फूड एंड ड्रिंक्स एंड व्हाट नॉट। इसलिए ये एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश। और एक टूरिस्ट को जो चाहिए, एक पूरा एक पैकेज हम कह सकते हैं, वो एक अरुणाचल प्रदेश ही है। अगर अरुणाचल प्रदेश में वैसे बहुत सारी फिल्में शूट हुई है, मैं आपको बाद में नाम बताऊंगा उन सारे फिल्मों का। तो जितने भी फिल्म अरुणाचल प्रदेश पे शूट हुआ है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप कोई ऐसा फिल्म देखते हैं जो अरुणाचल प्रदेश में शूट हुआ है, तो वो फिल्म देखते वक्त when you watch the movie, you feel like entering into the screen and getting yourself involved in that refreshing and breathtaking, beautiful nature. We have this the virgin natural lakes and long and gigantic waterfalls and high peak snow-covered, snow-capped mountains here, zigzag roads, and then deep valleys, and then the plains of foothills, and whatnot. So many culture, so many traditions, so colorful people, everything. एक टूरिस्ट को और एक एक्सप्लोरर को जो चाहिए, वो सारा का सारा आपको हमारे एक अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा। जब हम आज की जो टॉपिक है हमारा, वो फिल्म टूरिज्म है। तो अगर फिल्म टूरिज्म के बारे में अगर हम बात करें, तो मैं I would like to take one name, that is Shri Pema Khandu, the Chief Minister of Arunachal Pradesh. He is also the youngest Chief Minister of India. Very energetic because he is young. He is of course energetic and very dynamic leader, and he is very much interested in film tourism in Arunachal Pradesh to give to promote the tourism in Arunachal Pradesh. हमारे जो मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी है, उनका इतना ज्यादा इंटरेस्ट इस फिल्म टूरिज्म के ऊपर में है, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है कि एक फिल्म मेकर हमेशा एक खूबसूरत जगह की तलाश में रहती है, एक बिल्कुल अलग सा, जहाँ पे पहले कभी शूट नहीं हुआ, इस तरह की जगह और खूबसूरत जगह की तलाश में हमेशा एक फिल्म मेकर रहता है। और एक खूबसूरत जगह को हमेशा एक फिल्म मेकर का इंतजार रहता है, ताकि वो सारी खूबसूरती वो फिल्म मेकर अपने कैमरे में कैद कर ले और उसको लेकर जो फिल्म के जरिए लोगों के दिलों तक, लोगों के दिमाग तक ले जाए। और जो फिल्म देखते हैं, जो व्यूअर्स है, उनको जब ये जगह पसंद आता है, तो एज ए टूरिस्ट वो हमारे यहाँ पे आते हैं। तो इस तरह से, जैसे कि डॉक्टर गुलशन जी आपने कहा कि ये सब बिल्कुल एक दूसरे के साथ बिल्कुल रिलेटेड है, जैसे ग्लव्स और आपका हाथ है, उसकी बिल्कुल उसी तरह एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड है। तो इसी विषय में है कि हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, जिसका नाम मैं बार बार ले रहा हूँ, श्री पेमा खांडू जी, वो लेना इसलिए बहुत ही जरूरी मुझे लगा कि वो खुद मुंबई में 1, 2 या 3 बार या 4 बार वो उन्होंने विजिट किया है सिर्फ इसी के लिए। और वो मुंबई जाकर उन्होंने वहां पर दिग्गज बॉलीवुड के दिग्गज स्टार्स, सुपर स्टार्स एंड देन प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स, उन लोग से मिले, सलमान खान जी से मिले, सुनील शेट्टी जी से मिले, वरुण धवन जी से मिले, कंगना रावत से मिले, सैफ अली खान से मिले, शाहिद कपूर से मिले, उन सब से मिले। और उनका सिर्फ उनको ये कहना था कि आप लोग अरुणाचल में आइए और अरुणाचल में फिल्म शूट कीजिए, हमारा अरुणाचल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और उसका परिणाम स्वरूप आपको ये देखने को मिला कि
हमारे यहाँ पे जो हाल ही में जो फिल्म शूट हुआ है, बॉलीवुड के जो बहुत सारे फिल्म्स यहाँ पे शूट हुआ है, जैसे रंगून फिल्म यहाँ पे शूट हुआ है विशाल भारद्वाज का, जिसमें सैफ अली खान है, कंगना जी है, शाहिद कपूर जी है। और इसके बाद हाल ही में अभी एक फिल्म शूट हुआ है लेकिन रिलीज नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड ऑल, क्योंकि थिएटर्स वगैरह बंद है। तो शायद अब अगर ये थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा ये कोविड, तो शायद हमें 1-1.5 महीने के अंदर इस फिल्म, एक खूबसूरत फिल्म को देखने को मिलेगा और अरुणाचल के वातावरण और ये अरुणाचल की वादियों को हमें एंजॉय करने का मौका मिलेगा। वो फिल्म है भेदिया सॉरी भेदिया। ये अमर कौशिक जी का फिल्म है जिसमें वरुण धवन जी है और इसके बाद कृति सनन है। तो इस तरह से बॉलीवुड के कई दिग्गज अभी और क्यू में है, वो इंतजार में है, वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब थोड़ा पेंडेमिक कम हो वो अरुणाचल आए और शूट करें। क्योंकि एक वजह ये भी है कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर और यहाँ के गवर्नमेंट ने उन लोगों को एक बहुत एक पॉजिटिव बात ये बताई है कि वो अरुणाचल में आके फिल्म शूट की करें और यहाँ पे जो टैक्सेशन है उनके लिए उसमें भारी छूट, यानी कि ना के बराबर, सिर्फ वो आए और शूट करें। तो अरुणाचल में उनको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सरकार उनके साथ है, यहाँ के लोग, यहाँ के पब्लिक और यहाँ के लोकल लोग उनके साथ हैं, यहाँ का वातावरण उनका इंतजार कर रहा है, यहाँ की खूबसूरती उनका इंतजार कर रहा है। अगर अरुणाचल में कुछ नहीं है तो मैं ये कहूंगा कि इंसर्जेंसी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, आपको डिस्टर्ब करने वाले लोग नहीं है यहाँ पे, सब वेलकमिंग है। आप बेधड़क आकर पूरे दिल और मन लगाकर शूट कर सकते हैं, यहाँ की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करके दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। तो इसी तरह एक और फिल्म जो अभी वांगे जी ने थोड़ा पहले जिसका जिक्र किया था, कोयला फिल्म, ये सचमुच एक बहुत ही एक ऐसा शुरुआत था फिल्म टूरिज्म का अरुणाचल प्रदेश में, जिसके वजह से अरुणाचल का टूरिज्म में बहुत ज्यादा उछाल आया, बहुत ही ज्यादा उछाल आया। पहले जब हम टूरिस्ट को देखते थे अरुणाचल में इक्का दुक्का टूरिस्ट ही आते थे, लेकिन कोयला फिल्म के शूट होने के बाद और उसका वांगे जी बोले कि वो फिल्म अच्छी तरह से चल नहीं पाया, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं। मुझे तो लगा कि वो बहुत बड़ा एक ब्लॉकबस्टर, एक बहुत बड़ा हिट फिल्म था वो। ऐसा ही कोई शायद ही कोई ऐसा होंगे जिसने कोयला फिल्म नहीं देखे होंगे, क्योंकि उसमें माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान और अमरीश पुरी जैसे दिग्गज सुपरस्टार्स का होना ही बहुत बड़ी बात थी। और उनका शायद ही कोई ऐसा फिल्म होगा जो इंडियन व्यूवर्स नहीं देखते होंगे। तो इस तरह से कोयला के वजह से जो अरुणाचल में टूरिज्म में उछाल आया, मैं इसका श्रेय भी श्री दोरजी खांडू जी, जो हम लोग का जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, जो अभी पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर, उनके पिताजी हैं, स्वर्गवासी पिताजी हैं, तो उन्हें मैं ये श्रेय देना चाहूंगा कि उन्होंने तवांग में इनवाइट किया, जिसमें श्रीवांगे जी खुद भी थे, बहुत बड़ा उनका रोल रहा है इसमें। तो उनके वजह से बहुत सारा इसका एक्सपोजर जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश को मिला है। जी, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अच्छा। नॉर्बू जी, वांगे साहब ने बहुत तारीफ की, आप गाते भी बहुत अच्छा है, हमको पता लगा। वैसे तो कलरफुल, देखिए आपका जो कर्टन है साइड में वो भी इतना कलरफुल आपने लगाया है, हमको तो फिल्म का फीलिंग यहाँ भी आ रहा है, कोई शूटिंग होने वाला है वांगे साहब का। और आपका पीछे का जो पेंटिंग है दैट इज ऑल्सो सो कलरफुल, या पुट इट ओवर देयर। तो आप अभी सुनाना चाहेंगे या वांगे जी की पीपीटी के बाद सुनाना चाहेंगे, किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ सुनाना चाहेंगे, आपका मर्जी है। आप और वांगे साहब दोनों, क्योंकि मेरे दिमाग में तो बहुत सारे सवाल हैं जो मैं थोड़ा देर के बाद पूछूंगा, लेकिन आप अभी थोड़ा म्यूजिकल होना चाहेंगे या आप थोड़ा देर में होना चाहेंगे, चॉइस आपका है, आपका चॉइस है और वांगे साहब का चॉइस है। क्योंकि हम लोग आज अरुणाचल प्रदेश में घूम रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, फील कर रहे हैं उन सारी जगहों को जिनको आप लोगों ने पैकेजिंग किया है। और वांगे साहब से बहुत सारे सवाल हैं लोगों के जो हम अभी थोड़ी देर में पूछेंगे। लंदन से भी लोग जुड़ रहे हैं, कनाडा से भी जुड़ रहे हैं, यूएसए से भी जुड़ रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो वांगे जी, हाउ वुड यू लाइक टू टेक इट फॉरवर्ड? वेल, मैं रेस्ट देना चाहूँगा हमारा जी को।
अब तक आप वो सोच लेंगे कि उनको आपका मिलना आपका है। आपका इंटरनेट वांगे जी तकलीफ दे रहा है। आपका इंटरनेट थोड़ा हमको तकलीफ दे रहा है, थोड़ा सा कोशिश कीजिए। Are you able to hear me? हाँ, नाउ इट इज बेटर, नाउ इट इज बेटर। I will go ahead with the PPT now. ओके ओके, प्लीज गो हेड। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका मोड चेंज कर देता हूं, क्योंकि उसमें फोटो तो नजर नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ पीपीटी नजर आना चाहिए और आपका आवाज Okay. आना चाहिए। हाँ जी, आइए, जी जी जी। लेट्स स्टार्ट। So, ladies and gentlemen, it's a wonderful journey with Mr. Wange and Mr. Norbu. We are proceeding ahead. और नॉर्बू जी ने तो बताया कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ इज वेरी कीन देयर शुड बी अ फिल्म टूरिज्म, फिल्म इंडस्ट्री एंड एवरीथिंग। सो वी वुड रिकमेंड, व्हाई नॉट अरुणाचल प्रदेश, जिस तरह से हमारा चेंबर हर साल करता है। हम फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोगों को ऑनर करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस को भी लेके आते हैं। लेट्स प्लान समथिंग ऑफ दैट काइंड। वांगे जी, मैं आपका वेट कर रहा हूं पीपीटी का। Yes, it is ready. ओके, प्लीज गो हेड, प्लीज गो हेड, आई एम वेटिंग। ये तो मैंने ब्रीदिंग टाइम दिया है बीच में, ताकि आपका पीपीटी तब तक रोल कर जाए। आइए, लेट्स शेयर योर पीपीटी। एंड नॉर्बू जी, आप भी अपनी चीजों के साथ तैयार रहिए, और आगे जी जो कुछ आप बताना चाहेंगे। और आपने कुछ एक फिल्मों का बताया, और रंगून का मुझे था कि शायद म्यांमार में और मणिपुर में शूटिंग हुई है, मुझे नहीं पता था कि उसका शूटिंग भी अरुणाचल में हुआ है। वाओ, एक आपका बहुत ट्यूबलाइट। बड़ा बाग, हाँ, अच्छा बहुत बड़ा बाग फिल्म का इसका यहाँ पासीघाट में स्थित अच्छा। हुआ था। एक ट्यूबलाइट भी था, ट्यूबलाइट फिल्म का भी शूटिंग जी हुआ जी जी पीछे, जी 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 अपना सलमान खान जी का। जी ट्यूबलाइट में यहाँ यस पे शूटिंग हुआ। यस उसमें एक हमारे अरुणाचल के एक चाइल्ड आर्टिस्ट भी थे। अच्छा, ओके जी ओके। वन ओ, बड़ा अच्छा रोल किया उस बच्चे ने, हाँ, सलमान जी के साथ। यस, जी दैट वाज लवली। हाँ, तो वांगे जी, I वांगे जी, I think I am having a problem. कोई बात नहीं, आप एक काम Sharing. कीजिए, आप एक आ, काम कीजिए, आप चित्रा मैम से कोऑर्डिनेट करके पीपीटी मंगवा लीजिए। नो प्रॉब्लम्स, वी विल शेयर इट फ्रॉम द मीन हियर। टाइम हाँ, मीनवाइल आप नॉर्बू जी आगे चलिए। हाँ, आ गया, मीनवाइल कुछ मीनवाइल आया, मैं जब हाँ जब हम जब फिल्म आ के गया बारे आ में गया बात आ कर गया रहे आ गया हैं। आ गया। Is it आ गया। okay? Is Yes, it visible now? yes, it is very colorful, and यस it is यस as यस colorful as Wangeji is. Potential and prospects of film tourism in Arunachal Pradesh. Wow, that's great. And ladies and gentlemen, those are interested to get in touch with Mr. Wange. He has listed out both his mobile numbers: 9436045063, 8794891780. Anybody who is interested, you can get across to him. He's a wonderful person. I have been meeting him for quite some time, and whenever I travel over there, and do you know that there are Kiwi Gardens also? They're very near to Mr. Wange's place. चलिए आइए वांगे जी, चलिए आगे। वांगे जी, आवाज नहीं आ रहा आपका। वांगे जी, बैंडविड्थ को ठीक कीजिए। स्लाइड तो बहुत कलरफुल आ गया, आपका आवाज नहीं आ रहा अभी। ओ, ही इज गोइंग टू लॉग इन अगेन। नॉर्बू जी, तब तक आप थोड़ा सा हाँ जी। रोशनी दिखाइए, रोशनी दिखाइए। हाँ ये मैं क्या बोल रहा था कि हमारे यहाँ पे जो अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो तो बॉलीवुड मूवीज के बारे में बात कर रहे थे। तो हमारे यहाँ पे जो रीजनल फिल्म्स होते हैं, जो यहाँ के जो खुद के हमारे यहाँ के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और हमारे यहाँ के जो आर्टिस्ट होते हैं, उनका भी बहुत सारे फिल्म ऐसे हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल फिल्म्स में बहुत सारे अवार्ड्स लिए हैं। तो मैं कुछ नाम उनका जरूर लेना चाहूंगा इस वक्त, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा जो है उन्होंने अचीवमेंट किया है फिल्मी दुनिया में अपना। प्लीज तो ये बताइए। सारे जो है, ये सारे जो फिल्म्स है, मैं कुछ एक डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स का नाम जो मैं लेना चाहता हूँ, वो है मिस्टर सांगदोरजी थोंगडोक। मिस्टर सांगदोरजी थोंगडोक एक फिल्म मेकर है, एक यंग एंड बडिंग फिल्म मेकर है, जिसने फिल्म बनाए क्रॉसिंग ब्रिजेस एंड द रिवर सॉन्ग, which won the national award, the best film. वेरी गुड। And then one film, ABBA,
ABA, which won the award in the 67th International Film Festival at Berlin. Produced by Hali Wali, a producer from Arunachal Pradesh. And Aisa Ye Jahan by Maya Kohli, Mrs. Maya Kohli, in which Pali Sen is the actor, and then Kamslin Kohli, her daughter, is also there in that Norbu film. Norbu ji, हम Yes. यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको रोकना चाहेंगे। जी जी जो हमने बॉम्बे में फेस्टिवल किया, जी वहां पर मैडम हमारे साथ थे और अच्छा। कापा खोली जी भी थे। जी 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 तो और ये बहुत अच्छा, यस, बहुत बड़ा उनको श्रेय जाता है कि उन्होंने ऐसे अच्छी फिल्म बनाई है। और उनका ये फिल्म जो है इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फिल्म है, ऐसा ये जहां, ऐसा ये जहां। और फिर यहाँ पे जो हमारे जो नोबेल राइटर है एक हमारा वाईडी थोंगची, जो कि साहित्य अकादमी अवार्ड विनर भी है, जिन्होंने कई नॉवल लिखे हैं और जिनके ज्यादातर नॉवेल्स जो फिल्म बनाए उसके नॉवल पे, वो सारे अवार्डेड है, एक दो को छोड़ के सारे के सारे, जिसने नेशनल और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड लिए हैं। जैसे एक फिल्म का मैं जिक्र करना चाहूंगा, एक दो फिल्म का, जो एक सोनाम है, जो एहसान मस्जिद के प्रोडक्शन और डायरेक्शन में है, बना है। इसने रजत कमल अवार्ड दिया है। और इसके बाद इन्होंने लगभग दुनिया का हर एक शहर में स्क्रीनिंग किया है, शायद पूरा वर्ल्ड टूर उनका कंप्लीट हो गया। एंड देन इन द लैंड ऑफ पॉइजन वुमेन बाय मंजू बोरा, एक ये बहुत ही खूबसूरत स्टोरी के ऊपर इन्होंने फिल्म बनाए, और जो कि उनको भी बेस्ट फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड का मिला था। नॉर्बू जी, जो कि यहाँ के नॉर्बू जी, जब आपने ये नाम लिया तो हमको जानू बरवा जी याद आ गए। जी जी, जानू बरवा जी भी हमारे साथ थे बॉम्बे में। He was also there. जानू बरवा, great personality. Yes, he was also with us. हाँ जी। Yes yes. And इसके बाद में एक अभी इसी साल का हाल ही में जस्ट लेटेस्ट 2021 का एक फिल्म है द वाटर बरियल, जो कि वाईडी थोंगची के नॉवल के ऊपर में फिल्म बना है, जिसको इस साल का बेस्ट एनवायरनमेंट कंजर्वेशन अवार्ड मिला है। तो इस तरह के कई जो है रीजनल फिल्म, जो लोकल फिल्म यहाँ के जो आर्टिस्ट एकदम बिल्कुल वी कैन से रॉ आर्टिस्ट, अनट्रेन आर्टिस्ट, बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग, एंड देन द प्योर नेचुरल यहाँ के लैंडस्केप में शूट किया गया, और यहाँ के कंप्लीट एकदम प्योर फोकलोर के ऊपर में शूट किया गया। ये सारी फिल्मों को हमें इसलिए बहुत ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो है इंडिया में तो फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह में तो ये जाते ही हैं, स्क्रीन होते ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो सेलेक्टेड होके जो नेशनल अवार्ड फिल्म्स जो बाहर देशों में जाते हैं, तो ये एक तरह से तहलका मचाते हैं। बाहर देशों के जो व्यूअर्स है उनका बहुत बातें हैं, क्योंकि उनके लिए सब कुछ नया होता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इस तरह से भी जो फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का जो एक जरिया है, ये जो है फिल्म फेस्टिवल्स में जो बनते हैं फिल्म, जो हमारे फोकलोर्स को लेके बनते हैं, लोकल ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स लोग जो फिल्म फेस्टिवल्स के जो अच्छे जो आर्ट फिल्म बनाते हैं, तो इनको भी मैं समझता हूँ कि प्रमोट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और इनका बहुत बड़ा योगदान है टूरिज्म को प्रमोट करने में। वेरी नाइस। मैं तो आपका म्यूजिक एल्बम्स भी बहुत सुनता हूँ, आपका बहुत सारा निशी सॉन्ग सुनता हूँ, आपातानी सॉन्ग सुनता हूँ, गालो सॉन्ग सुनता हूँ, आदि सॉन्ग सुनता हूँ, ये सब जितना भी है। और आपका जो तवांग फेस्टिवल है, कितना बड़ा, देखिए जो बुद्धिज्म का फेस्टिवल है, कितने लोगों के लिए वो कितना बड़ा अट्रैक्शन है। वहाँ अपना वांगे जी, शुड वी ट्राई नाउ? वांगे जी, शुड वी ट्राई? Shring Wange ji, my dear brother, should we try now? अभी देखिए हम आपके लिए बोलेंगे, आवाज देकर हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ,
वांगे जी आप बहुत सता रहे हैं हमें। नॉर्बू जी। कनेक्टिविटी के कारण, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है क्योंकि वो बोमडिला में है, and in such यस a height, यस you know, यस like यस। yeah. क्योंकि हम तो श्रिंग वांगे जी बिकॉज टूरिज्म में ह्यूमर, हैप्पीनेस, लाफ्टर, म्यूजिक, आपका गाना हो जाए तब तक, जब तक वांगे जी ट्राई कर रहे हैं आपका एक गाना हो जाए। जी, मैं किसी जमाने में गाया करता था, लेकिन अब तो काफी अरसे हो गए गाए अरे हुए, लेकिन फिर ऐसा भी मत ट्राई करता कहिए। था दो आप लाइन। आप सब लोग बहुत अच्छा गाते हैं। कापा खोले जी के, किशोर कुमार के गाने मैंने ऐसे ऐसे सुने हैं। आप लोग जी सब सिंगर हैं और इतने अच्छे गाने गाते हैं आप। हिंदी म्यूजिक तो मैं हैरान हूं आप लोगों का। मोहम्मद रफी, महेंद्र कपूर, सोनू निगम, आप लोग बहुत प्यारे गाने गाते हैं। कोई भी गाना हो जी नॉर्बू जी, कोई भी गाना जी सुनाइए। जी। जब आपने कापा खोली साहब का नाम ले ही लिया तो मैं एक गाना सुनाऊंगा, जिसका मैं बहुत पहला, जो शायद मेरा फर्स्ट एल्बम था, जिसका स्पॉन्सर उन्होंने किया था। वाह वाह, दैट्स जी। ग्रेट। हाँ जी। तो मैं उसी उसी एल्बम में से एक दो लाइन हाँ, सुनाने की कोशिश सुनाइए करूंगा। सुनाइए। ए मोले चिसुला गूते गुमे करसो गूंद थी दोईमा सोया ए मुले चिसुला सोया ए मुले चिसुला ए मोले चिसुला पाते पमे करसो पांद शावारोचू सोया ए मुले चिसुला सोया ए मुले चिसुला। ये फोक सॉन्ग है, मोनपा फोक सॉन्ग, मोम्पा ट्राइब का, मोम्पा ट्राइब का। ओके मोनपा टाइप का एक फोक सॉन्ग है। ओके, वंडरफुल तो मैं वंडरफुल। वही आपको बोल रहे थे कि कापा खोले का हाँ जब नाम लिया यस तो यस। और जब वांगे जी बात कर रहे थे बालीपोंग का, तो हमारा सारा एक एक सीन याद आ रहा था हमको। उधर जो टूरिस्ट लॉज है, जिधर से एंटर करते हैं आसाम से और थोड़ा आगे चलते हैं, ब्यूटीफुल जर्नी, सच अ वाटरफॉल्स एंड सच अ ब्यूटीफुल लेक्स एंड रूट। अरुणाचल इज सो ब्यूटीफुल। आई थिंक मेरे को वांगे साहब का जो शुरू का बात था कि फिल्म पोटेंशियल, फिल्म इंस्टीट्यूट, फिल्म फेस्टिवल, वो सब चीजें मेरा बहुत इच्छा है जानने के लिए। फिल्म फेस्टिवल कौन से महीने में होता है, कैसे है, फिल्म इंस्टीट्यूट का क्या स्टेज है अभी, ऑल दोस थिंग्स वी वुड लाइक टू नो। वांगे जी अभी हमको बोलना पड़ेगा, आ जाओ तड़पते हैं अरमां, अब रात गुजरने वाली है। और फिर थोड़ा देर में हमको बोलना पड़ेगा, सूरज तो उधर से उगता है अरुणाचल से, और अभी थोड़ा देर में चांद निकल आएगा, तो हमको बोलना पड़ेगा, आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है ब्यूटीफुल चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, बात आधी मुलाकात मुलाकात आधी। वाह, आप तो आधा बिल्कुल है बहुत बड़े सिंगर हैं चंद्रमा। आप। आज वांगे साहब के वेरी साथ वेरी हमारी वेरी बात नाइस। आधी ना रह जाए ना। आई एम वेटिंग फॉर दैट कि वांगे वांगे साहब के साथ हमारा बात आधी ना रह जाए आज। तो Okay, नॉर्बू जी, now we या are starting. नाउ वी आर स्टार्टिंग। वांगे जी ऑल अप टू यू, इट्स योर शो। हम तो फिलर्स हैं, हम तो फिलर्स हैं। ये तो आपका प्रोग्राम है, जैसा आप चाहें, क्योंकि we have dedicated this time to Arunachal Pradesh, and today we are starting with you. And I pray to Almighty and I request the government of India, we should try and have better bandwidth and better connectivity in the entire northeast part of India. That's what is needed. Everybody needs a better connectivity, better bandwidth. We all should try. We all should try. नहीं आ रही
वांगे जी, देखिए कैसा हो रहा है, नहीं आ रही है आवाज, हमको फिर गाना पड़ेगा। जिंदगी कैसी है पहेली, हाँ हाय कभी तो हंसाए, हाय कभी ये रुला। कभी ये रुला। जब इंटरनेट नहीं चलता है तो रोना पड़ता है। इंटरनेट चलना चाहिए ना। देखिए टूरिज्म के अंदर ये है, अगर एक चीज काम नहीं कर रही तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, बिकॉज असली चीज है द शो मस्ट गो ऑन, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। यस 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 यस। वांगे जी, वांगे जी, from another. श्रिंग वांगे जी, oh श्रिंग वांगे जी, श्रिंग वांगे जी, आई थिंक Okay, the network is terrible there in yes Bombay. yes, no problems, no problem, let him try। नॉर्बू जी तब तक थोड़ा हाँ और यार। बताइए, हमें थोड़ा और बताइए जब तक श्रिंग वांगे जी करते हाँ हैं। जो हाँ तो फिर क्योंकि हम फिल्म टूरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ की खूबसूरती के बारे में बात करना तो लाजमी है। हाँ एक दोस्त थे मेरे गुवाहाटी में, तो हाँ वो कुछ दिन पहले मुझे उन्होंने एक फोन किया था। तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, कोई गाड़ी का जो एड बनाने वाले कंपनी है, वो कहीं कोई महिंद्रा की कोई गाड़ी है जिसको वो उसका उसका ऐड बनाना चाहते हैं, वो उसका प्रोमो बनाना चाहते हैं। तो ऐसे उनको कुछ ऐसे लोकेशंस की जरूरत है जो कि वो आके शूट कर सके। तो मैंने कहा क्या 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 रिक्वायरमेंट्स है उनके। तो उन्होंने कहा कि उनको चाहिए कि मतलब बिल्कुल स्नो कैप माउंटेन्स, जिगजैग रोड्स चाहिए उनको जहां से उनकी गाड़ी गुजरेगी। और इसके बाद में उनको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ब्लू रिवर्स के ऊपर से जाता हुआ लोहे का ब्रिज चाहिए जहां से उनकी गाड़ी गुजरेगी। और लोहे के ब्रिज के कोने कोने में जो वो बुद्धिस्ट फ्लैग्स वगैरह लगा होना चाहिए। अच्छा एंड देन हाँ उनके वो ऐसे रिक्वायरमेंट्स थे। और इसके बाद उन्होंने कहा कि और ऐसा कोई फुटहिल्स में ऐसा प्लेन एरिया चाहिए जहां पर वो पैराग्लाइडिंग से वो उतरेंगे। और इसके बाद कोई बहुत ही खूबसूरत झील चाहिए जिसके किनारे से गाड़ी का रोड हो और वहां से उनकी गाड़ी गुजरेंगे। तो ऐसा उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट्स है हर जगह पे आप छान मार लीजिए, अगर हमारे रिक्वायरमेंट कहीं मिल जाते हैं तो हम वहां पर शूट करने के लिए आ रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि एक काम करो, उस पार्टी को सीधा अरुणाचल भेज दो। अच्छा उनको सीधा अरुणाचल भेज दो, उनको कहीं अच्छा और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उनके जितने भी रिक्वायरमेंट्स है वो अरुणाचल के शायद 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही मिल जाएगा, पूरा स्टेट घूमने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी उनको। वाह तो वाह, इस तरह से वो आए और उनको वो सारा चीज मिल गया जो उनका रिक्वायरमेंट था। उनकी जो जरूरतें थी वही खूबसूरत लेक के सामने से जाता हुआ गाड़ी का रोड हो गया। इसके बाद में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर स्ट्रीम्स एंड देन रिवर्स के ऊपर से जो लोहे का ब्रिज जाते हैं वो, और इसके बाद पैराग्लाइडिंग, एवरीथिंग, वो सब कुछ उनको यही मिल गया है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि एक कंप्लीट पैकेज है अरुणाचल प्रदेश फिल्म वालों के लिए, फिल्म बनाने वालों के लिए। वो कहीं और उनको जाके ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। श्री वांगे इज बैक। वांगे जी यू आर लुकिंग सो कलरफुल, ही इज ट्राइंग टू कनेक्ट, वो अपना ऑडियो कनेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक सो we would like to request that there are big challenges as far as the connectivity is concerned। तो मैं तो कई बार सोचता हूँ कि बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, टीचर कैसे पढ़ाते होंगे, कितना चैलेंजेस है। आप देखिए ना पूरा एजुकेशन सिस्टम में, स्किल सिस्टम में। और आज हम बातचीत कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश एज ए डेस्टिनेशन फॉर फिल्म टूरिज्म, तो हमको कनेक्टिविटी तो देना है, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। श्रिंग वांगे जी, सबसे इम्पोर्टेंट, आपका म्यूट हो गया, आपका म्यूट हो गया श्रिंग वांगे जी, आपका म्यूट हो गया, उसको अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। Now you're able to hear? Yeah, I can hear you now.
Okay, okay. एक बार So, ट्राई कीजिए, अभी कनेक्टिविटी बेटर है, अभी कनेक्टिविटी बेटर है। okay, okay. इतना अच्छा आपने प्रेजेंटेशन बनाया, इतना खूबसूरत, मैं क्या बताऊं आपको, मैं देखने का मन है। तब तक थोड़ा जल्दी जल्दी बता दीजिए कि आपका फिल्म फेस्टिवल कब होता है, Well, film festival तो कौन से almost महीने में? every year होता है, and there's also award is being given to all the awardees. अच्छा, जो आपका फिल्म इंस्टीट्यूट बन रहा है वो किस स्टेज तक है? अभी इनिशियल स्टेज में है। अभी इनिशियल स्टेज में, ओके। पर कुछ कोर्सेज वगैरह शुरू हुआ है कि नहीं? Yes, courses have started. कोर्सेज हैव स्टार्टेड, ओके। तो सेक्टर, जो हमारा मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर स्किल काउंसिल है, उनका कुछ प्रोग्राम वहां पर आया है कि नहीं अभी? जो भारत सरकार का प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में जहां पर कार्यक्रम है पार्ट 3 का, क्या वो कोर्सेज वहां आया? I think पता करते हैं, कोई बात नहीं, पता करते हैं। We will try and find out all the young boys and girls from Arunachal Pradesh, those are watching this particular program, or for that matter, anybody from Northeast. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में फ्री ऑफ कॉस्ट 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का साउंड का, लाइट का, डायरेक्शन का, एडिटिंग का, म्यूजिक का, स्पेशल इफेक्ट्स का, बैकड्रॉप का, कॉस्ट्यूम का, सेट डिजाइनिंग का, हर एक चीज का कोर्सेज अवेलेबल है। मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर स्किल काउंसिल का वेबसाइट पर जाओ। यू हैव गॉट ए वेरी डायनेमिक सीईओ मिस्टर मोहित सोनी। हम लोगों ने, हमारे चेंबर ने इस कोरोना के टाइम में वी हैव डन अबाउट 100 प्रोग्राम्स विद देम। अ वेरी वेरी डायनेमिक सेक्टर स्किल काउंसिल। बच्चों का मन है रेडियो, टेलीविजन, थिएटर, म्यूजिक, फिल्म्स, एनिमेशन, डांसिंग, जो कुछ भी बच्चों को अच्छा लगता है, हर एक कोर्सेज अवेलेबल है मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ। श्रिंग वांगे जी, अभी थोड़ा ट्राई कर सकते हैं आपका पीपीटी? Okay, let me try. अभी आपका आवाज तो अच्छा हो गया है। यस, यस। Okay, Wow. so this is the potentials and prospects of film tourism in Arunachal Pradesh. Yes. And next slide. Celebrity moments. Wow. Well, celebrate moments means we have got a lot of people coming to Arunachal Pradesh, and also we are in touch with these people. और So this is, अनुष्का जी के साथ जो खड़े हैं वो आपके मैडम हैं? हाँ, वो हमारा ये सामने में जो है, she is my wife. Her name is Anshu Jamsanpa. Okay. And she is also she has also acted in a movie, and that movie has gone on to win the national award from the President of India. Very good. And ladies and gentlemen, I would like to tell Mr. Wange ji is feeling shy to tell she is in mountains at this point of time doing the adventure part of tourism, and she would be coming back in the first week of September, Wange ji? Yes, very soon she will be back from Ladakh. Okay. We pray to Almighty that her trip should be successful and everything should be nice. Here, ladies and gentlemen, you can enjoy Mr. Wange, Mrs. Wange, and Virat Kohli and Anushka ji. Okay. I won't say she's from my family because Anushka Sharma. Okay, let's go ahead. Okay. Let's go ahead. Yes. We also discussed with them about possibilities of coming to Arunachal Pradesh, to Northeast India, and they said they love to come and they would be doing something. Okay, wonderful, wonderful. This is such a positive thing we have. Okay, next. Please go ahead. Wow. Being felicitated by actor John Abraham. Arunachal speaks PD Sona and ADC Mechuka. Yes. Yeah, this is in Mechuka, where I was felicitated by John Abraham, who is also the brand ambassador of Arunachal Tourism. Okay, he's the brand ambassador for Arunachal Tourism. Yes. Okay, yes. Wow, that's very good. And that's how we are in touch with John Abraham. We are in touch with so many others. This is Arjun Rampal. Huh. He invited us to Mumbai to his to his bungalow.
Very good. seafront fencing, and we had spent quite a time discussing about possibilities of doing something Bollywood in Arunachal Pradesh. Very nice. Very Arjun nice. has been here in Tawang, and he has seen so many to Itanagar also, and he has been planning. And Okay. this is actor, and this one everybody knows, Miran Yeah, Suman. Milan Soman. Fitness. Hmm. And his wife is Ankita Kondor from Assam. Okay. So he's also planning to do something, and he wants to do, this one marathon race. He is organizing Pinkathon every year in different parts of India, including Guwahati. So Very he's nice. also planning something like this in Arunachal Pradesh with Anshu and with our team. Very nice. Yeah. So next. Yeah. This is actress and model Jia Khan in Mumbai. In Mumbai, famous studio where we were invited for a shoot. That was a shoot done in the famous studio in Mumbai, and she and Anshu were there as the model. Very Yes. nice. Very nice. And our friend, this one, Tsangpa Norbu was saying, and again and again referring to our Chief Minister. So here is our Chief Minister, young, dynamic Pema Khanduji, and he has been trekking to very, offbeat places like Luthang, like Mago, and those places are very, very attractive for a tourism point of view. And he's giving all the benefits and all the, whatever is possible from the government side. He's welcoming all the big producers, directors, and filmmakers to Arunachal Pradesh. So Wonderful. whoever wants to come here, it is easy. Very, very. It has been made very easy from the government of Arunachal Pradesh. Very nice. Wangeji, I wish to mention on that slide once again, if you can just get back on that. When there is a political will and there is a bureaucratic will, and the community as a whole, the state as a whole, everybody is keen to develop a particular product or services, it has to see the daylight. It's always a pleasure. I've been meeting Mr. Pema Khanduji very often, and whenever I have traveled to Arunachal, I found him very warm, very nice. We traveled together a couple of times during the flight to Delhi, and I always found him, he is open to ideas. He wants to do something new for the younger generation. So I would say you're very fortunate to have such a young, dynamic, and a very open, vibrant Chief Minister. And recently we all saw him on a bicycle on one side, on the other side, Kiran Rijijuji, and in between Salman Khan. That was something very nice. Okay, yes. Please go ahead. Please go ahead. We are coming to that also. Okay. So next slide is, this is, as you all know, our Prime Minister, Honorable Prime Minister, Mr. Modi ji. And it was when we got an opportunity to give him a memorandum, So not only for Arunachal, we gave a memorandum for all of Northeast India. And he has he was very positive, and he said that yes, the Northeast is a very special for me, and I will I have a lot of things planned for Northeast. And we were so happy to receive. Earlier also, we had the opportunity to meet the Honorable Prime Minister, Dr. Manmohan Singh. That time also, we gave the representation for the promotion of tourism in Northeast India. So whenever I get an opportunity, I make it a point to at least request, to at least give our, representation. And अगर मांगने से मिलता है, तो इसीलिए मांगते हैं, तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो मिल जाता है. So that is why we are really happy that Northeast में काफी tourism का बढ़ावा मिल रहा है, and we are really happy that we have the blessings of our government, both at the center as well as at the state level. Yes. Wonderful. Next slide. So activities in Arunachal Pradesh, we have a few activities to share with you. And slide, please. Yeah. Yes. This, is a Koila movie which was shot in Arunachal Pradesh.
and I was there with them for 45 days. It is not days, day and night we were working, and these are the places which has become so famous and so popular, and that's how tourism has really picked up. And that time we did not have any 3-star hotel, 5-star hotel. We somehow managed. But now, very soon, we will have 2 5-star hotels, one in Dirang and another in Tawang. The Tawang one is almost on the, giving a finishing touch, and will be commissioned very soon. And so all the Hollywood, Bollywood, whoever comes there, they will have good properties to stay and to do the filming in Arunachal Pradesh. Shring Wange, one question over here. जब 45 दिन का शूटिंग हुआ शाहरुख खान का और माधुरी जी का यहाँ पर, तो फिल्म का आपको क्या लगता है कितना परसेंटेज पोर्शन वाज शॉट इन अरुणाचल प्रदेश? Well, I think more than 80-85% was shot. 80-85%. Okay. Start करके पूरा चौपर लेके आया था, and it was amazing experience for all of us. Wonderful. And it was a learning experience. And now we are ready to receive any big projects. So we are ready. Wonderful. Wonderful. Yeah, God bless. God bless. Yes. So this also our friend has just mentioned about this one, Varun Dhawan. Yes, yes. Our chief minister, our speaker, they themselves are with the team, encouraging them and helping them with whatever is possible. So it has been a very good opening of this one, Bollywood shootings in Arunachal Pradesh. Wonderful. Beria. It will be released very soon. Yes. Okay. Yeah, next slide, please. Tube light, yes. So this small, handsome, cute, this one star is our local boy from Arunachal Pradesh. His name is Martin Ray Tango, and really he has done excellent. This one, he has done a part in this movie. Okay. So we're really happy that Salman Khan has given full support. Salman Khan was a mentor, in fact, I would say. for the boy. Wow, great. Yeah, next slide, please. Next slide, please. Agya, Crossing Bridges, movie starring, Everest star Dr. Anshu and Dorji Funso. Yeah, this is a movie which was shot here in Shergaon and Bomdla and Dirang area. Mm-hmm. And this movie had gone to so many film festivals in different parts of India and abroad. Okay. And has also won a national award, which was given by the Honorable President of India. Wow, that's great. Wonderful. So we are doing whatever is possible to promote, tourism through movies in Arunachal Pradesh. Here it comes. This is the slide. Yeah. Yeah, full of action. We have our Kiran Rijiju, our Union Minister, Law and Justice, Government of India. Yesterday only he was here in Bomdla. We had a half an hour interaction. And of course, my topic is, of course, tourism. So we had a lot of discussions on tourism, and a lot of things are being planned. And with his advice, with his guidance, I think we can do a lot. We can do a lot, especially in the field of film tourism in Arunachal Pradesh. Wow. So this is our Pema Khandu Chief Minister and our Salman Khan, and of course our Kiran sir. So all of them, we are cycling in Mechuka area. Mechuka is a beautiful place in the eastern part of Arunachal Pradesh. Yes. Yeah, next slide, please. So we also have, film awards and travel awards and conventions, though not on a large scale, but I'm sure in the coming years we will have big convention centers. We'll have programs, and we'll invite all the big celebrities from different parts of India and abroad. And then we'll have functions in Arunachal Pradesh to promote film tourism.
This is going to happen. This is going to happen very soon with our Chief Minister in the leading from the front. So these things are going to happen very Wonderful. soon. Wonderful. Yes, next. Also, yes, as I already spoke of film festivals and workshops which are happening. In the background of this, the backdrop which you will see trees. These trees are grown on the water, I mean the lake. And I've seen so many lakes in Switzerland. And when I come back and see our this one Sangesur Lake, which is also now popularly known as the Madhuri Lake after the movie that Koala was shot there. So it has become quite popular. I mean the name with the Madhuri, So this lake is absolutely awesome, mesmerizing, and anybody who comes to Arunachal or for that matter to Tawang must visit this place. So like that, film festivals and workshops are happening, though not in a large scale, but we will have it in a larger scale, in this one with more people coming from Mumbai and from other, even from this one, Tollywood, we call it Bollywood. So we'll be inviting them, and then we'll be organizing all these workshops and film festivals in a larger scale to attract film tourism in Arunachal Pradesh. So locations, Arunachal is 84,000 square kilometer and more than 1,000 unexplored Himalayas. So there's no dearth of locations, and we will just share some of the locations which you can see, and people can come and shoot here. So this is the TDL monastery in Dhiram. In Dhiram. It's a really, really beautiful and very huge complex, and it is one of the most attractive monasteries in this region. Yeah. Next one, please. This is your GRL monastery. Yeah. So this is the one where we had yesterday a meeting with our Law Minister Kiran sir, and this is also the place where we have done this one. Discovery Channel people had come. We had shot here for at least 3-4 days. And like that, so many different channels are coming to Arunachal Pradesh. And most of them try to contact us either directly or through the government. And we give them full support in terms of management, in terms of logistics, in terms of permission. So anybody who is interested to shoot in Arunachal Pradesh, they are most welcome. We will give our 100% support to them and make their project in Arunachal Pradesh a success. Very, very encouraging. Very encouraging. Very encouraging. Very nice. Thank you. Yes. Thank you. Also, the sites. These are some of the campsites which we organize, because in the mountains we don't have hotels or we don't have beautiful homestays. We have got limited homestays and limited hotels. So we pitch tents, spacious tents, big tents, and in lovely locations. When you shoot, it is not like you are working, but you are enjoying. So it is like your work should be your enjoyment. If your work is enjoyment, then I think then it's the best thing to happen with you. Yeah. Next slide, please. Camping and trekking. Yeah, like this, there are so many other places in Arunachal Pradesh. We have mountains, we have lakes, we have rivers, and we have I mean, like anything and everything is possible. Of course, we don't have a sea. Except the sea, we have everything from river to the lakes to the mountains. We have almost everything which is suitable for the filming in this part of the world. Yeah, next slide, please. Snow-clad mountains.
This one you can have as much as you want. I mean, you don't have to go to Switzerland to shoot. We have ample snow, we have ample snow-clad mountains, and beautiful locations. And now with the opening up of this one fixed wing, this one airfields, one is coming up in Dirang, another one is coming up near Tawang, another one is there in coming up in already zero. This one zero. Sorry, Teju is already functional. Flights have started coming there. Pasighat is already functional, and Itanagar, a place called Hollongi, near Hollongi, it's one airport is coming up, which will become functional, I think, by 15th August next year. And this is going to connect us to Delhi, Mumbai, and international destinations will also be connected to that Itanagar airport, which is at Hollongi. Okay. So Arunachal is going to be connected very well with the rest of the world. So I think people can start planning and start shooting in Arunachal Pradesh. Very nice. Very nice. Hollongi is near that bypass which comes and enters the Itanagar, and you come straight to the town capital. Yeah, it is just 30 kilometers Yes. to Itanagar. Next slide, please. So like this, we have lakes. This is called 7 lakes in Dibang Valley. Like this, we have got huge lakes, and you can do water sports also. And this is very ideal for outdoor locations. And not one, two, but hundreds of lakes you will find like this, because Arunachal is the biggest state in Northeast, 84,000 square kilometer. So there's endless scope, endless locations. So all you have to do is come and explore, and we are there to help you out with the locations. Yes. People from London are mentioning beautiful places, breathtaking. Wow, that's coming from London. Yes. This is your Sangestar Lake. Yes, Sangasur Lake. Yeah, this is near Tawang, and as you can see, there these trees are coming out of the water. It's very unique and very interesting place to be in. Really, this one. People come here, like if you are going to Agra and not seeing the Taj Mahal, then it's not like going to Agra at all. Same way, if you come to Tawang and you don't visit Sangasur Lake, then it is like not visiting Tawang at all. So make it a point to visit this place whenever you are in Tawang area. Thank you very much. Wonderful presentation. I must compliment. Wonderful journey. So I think there is a lot which has to be done. And particularly when we talk about the greenery, when we talk about beautiful locations, when we talk about mountains, we talk about lakes, we talk about art, craft, culture, cuisine, people, dances, music. I think Arunachal has got everything. I'm so very happy that we are starting this series today with Arunachal, because I owe so much to Arunachal. I have to give it back to Arunachal. I started my army uniform and my career from Arunachal. And before I moved to the Ministry of Tourism, I still recall. And Mr. P.K. Dong, our senior advisor, who rose to one of the highest rank in the Ministry of Tourism. He was regional director, Frankfurt, looking after Europe. And always we keep talking about it, how we can take our Northeast forward and what best we can do. And Mr. Tsering Wange and Mr. Norbu coming this evening and sharing your vision. I think let's have the closing remarks, and thereafter we will call it a happy evening. It's 9:30, and usually we have got 8 to 9, but technical glitches were there. So that's why we thought, how can we miss such a wonderful presentation? We would have missed Prime Minister, we would have missed Chief Minister, we would have missed Salman Khan,
We would have missed everybody. So finally, at least your hard work paid and we all could see the presentation. That is something fantastic. Yes, closing remarks from both of you. Closing remarks from both of you. मिस्टर नॉर्बू, आप बोलना चाहेंगे क्लोजिंग रिमार्क? ठीक है, मैंने बहुत बोला, आपको मौका मिलना चाहिए, आप बोले. थैंक यू. वेल, हम लोग का तरफ से तो यही है कि अरुणाचल वासी, वी वेलकम ऑल दोस्त हु आर इंटरेस्टेड टू शूट इन अरुणाचल प्रदेश. जैसा कि हमारे गवर्नमेंट ऑलरेडी साथ में है, and we people who are into tourism tour operators वगैरह, sorry, along with the this one mentorship and guidance from Dr. Gulshan sir, we are ready to serve you. Anybody who is interested to come to Arunachal Pradesh to shoot, we will give our 100%. आप आइए, भगवान ने बहुत कुछ दिया हुआ है अरुणाचल को, लेकिन हम लोग इसको ज्यादा एक्सपोज नहीं कर पा रहा है. वी हैव गॉट आवर लिमिटेशंस. बट आप लोग जो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता मेट्रो सिटीज में है, जो हु इज डूइंग लॉट ऑफ बिग प्रोजेक्ट्स ऑन टूरिज्म, सिनेमैटिक टूरिज्म, अब्रॉड में करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं. आप अरुणाचल में आइए, सिर्फ लाख, 10 लाख, 20 लाख खर्चा कीजिए और वो आप 10 करोड़, 20 करोड़ का फायदा यहाँ पे आप लेके जाइए. ये इतना हम लोग बोल सकता है. एंड वी वेलकम यू फ्रॉम आवर डेप्थ ऑफ आवर हार्ट. जो भी फिल्म से रिलेटेड प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, इन्वेस्टर्स जो भी है, वी वेलकम ऑल ऑफ देम विद ओपन हार्ट. बस यही हम लोग का तरफ से इतना ही कहना था. और हम लोग ने कोशिश किया कि अरुणाचल का जो भी पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स को दिखाने के लिए, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इतना सक्सेस नहीं हुआ या पता नहीं, बट वी हैव गिवन आवर बेस्ट एंड वी होप टू सी एवरीबॉडी इन अरुणाचल इन कमिंग डेज. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. Wonderful, wonderful. Norbu ji, anything? नहीं, बस यस, conclusion में मैं ये बोलना चाहूँगा. One more time, I would like to mention the name of Honorable Chief Minister Shri Pema Khandu. He is doing such a tremendous job for the promotion of tourism in Arunachal Pradesh. Recently, he has launched one mobile digital movie theater. Digital movie theater. With a capacity, with a sitting capacity of 150 people in one go. So these you see, these vehicles can reach any place, and jahan tahan wo, not only in Arunachal Pradesh but out of Arunachal Pradesh in many states wahan pe jate hain, and then showcase the beauty of Arunachal Pradesh to promote tourism. Wonderful, wonderful. My deepest and heartiest gratitudes and thanks to both of you, and very, very especially because from the tourism industry, I would call it biologically my younger brother, Mr. Tsering Wange, but intellectually my elder brother. And I also convey my deep thanks to Mr. Tsangpa Norbu ji, who is from the film tourism, film industry, and he has dedicated his entire life. तो मुझे तो बार बार आज एक्चुअली मुझे थोड़ा पहले पता होता कि इंटरनेट इतनी बार तंग करेगा तो मैं कुछ करोके लेके आता और उस करोके के माध्यम से मैं बहुत सारी चीजों को, because I love Arunachal, I owe so much to Arunachal. I wore my army uniform in Arunachal. I started my rank, the first rank from the Arunachal. I got my first salary from Arunachal. So it's a wonderful place, wonderful people. I enjoyed, and I'm very, very fond of those memories. I cherish them whenever I think about them. And closing, क्योंकि आज film tourism का है, तो close करने से पहले जो वहाँ की खूबसूरत हवा है और वहाँ के जो खूबसूरत लोग हैं, नज़ारे हैं, वहाँ को जो नेचर ने बेस्टो किया है, तो चलते चलते हम इस प्रोग्राम को बंद करने से पहले हम कहना चाहेंगे, इन हवाओं में, इन फिजाओं में, इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे. And Arunachal is saying, आजा आजा रे
तुझको मेरा प्यार पुकारे हो वाह It's a beautiful place, beautiful people. Thank you very much, Shring Wange ji, and thank you very much, Norbu ji. And ladies and gentlemen, tomorrow, once again, with the efforts of the entire team of the, the integrated tourism team of the Northeast, the Northeast integrated confluence of the tourism, you will be moving to Meghalaya, and day after tomorrow, we will be going to Nagaland. उसके बाद आगे आपको बताते जाएंगे. पूरे 8 दिन हम लोग डेडिकेट कर रहे हैं. अरु के आंचल से आज हमने शुरू किया और इस जर्नी को आगे लेकर चलेंगे. एंड आई वुड रिक्वेस्ट श्रिंग वांगे जी, लेट्स प्लान वन awards, honors, recognitions in Mumbai. Every year our chamber does, and we get all the celebrities together. सारे production houses को, सारी association को हम इकट्ठे लेके आते हैं. Let's plan it out that we take Pema Khandu ji, we take Kiran Rijiju ji, and we should work out a wonderful program, and we should all meet over there, something very, very interesting and rocking. Namaskar. Thank you very much. So green morning, green afternoon, and green evening to everybody world over. बहुत बहुत धन्यवाद. खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए. Music is beautiful. Film industry is beautiful. Tourism is beautiful.